to be on the stage. Now I invite Dr. Pankaj Pandey, Secretary, Uttarakhand, to be on the dais. Now I invite Sri Bhagat Singh, Mission Director, Rajasthan, to be on the dais. Welcome. Now I invite Vaidya C.N. Jani, Director, Gujarat, to have a seat. Ma'am. Now I invite Dr. Padmanand, Senior Consultant, Tamil Nadu, to be on the stage. Again, I welcome all of the participants present here and our distinguished speakers. Yesterday, we had a great interaction here with the stakeholders where certain key points were laid out, and I hope we'll have a better outcome in our mission. As we looking forward to the today's session, we will have a wonderful deliberations, which is very crucial for the integration of the Ayush system in public health care. Today, we have the session on the topic showcasing the best practices under NAM, where we will have a wonderful insights from the state UT governments, which will lead to the optimal results. The main rationale for documenting and sharing best practices is to enable persons and the organization working in the health sector to avoid reinventing the wheel and in order to learn and improve performance and to avoid mistakes of the others. Ministry of Ayush is implementing centrally sponsored scheme of National Ayush Mission through state and UTs for the development and promotion of the Ayush system and providing them the financial assistance as per the proposal in the State Annual Action Plan. Under flexible component of NAM, states are allowed to take innovative activities based on their assessment needs of the public health system, demands and goals. Moreover, most of the states are showing their commendable planning and utilization of the budgets and creation, operationalization in large infrastructure, workforce, and there is a consistent supply of essential drugs and implementing mechanism that are the models for the others to follow. Today, we will have a delightful presentation from our speakers with respect to the best practices that is being carried out in their states. Documentation and sharing of the best practices affords one opportunity to acquire knowledge about the lessons learned, and they continue how to improve and adapt strategies and activities through their feedback, reflection, and we will get an opportunity to analyze how to implement in a larger scale in a sustainable and an effective way. Now, not taking a longer time, I would like to call upon Srimati Leena Jori IAS, Principal Secretary Ayush of the Government of Uttar Pradesh, to deliver the presentation on the achievements in the infrastructural development carried out in the state of Uttar Pradesh. Under National Ayush Mission, we have been supporting the state government in various infrastructural developments, and the state has done a commendable work on their infrastructure. Now, I would like to invite ma'am to have the presentation. Thank you. Thank you so much for the invite to the NAM conference. And I think it has been a very delightful deliberation yesterday. First of all, I would like to extend a very warm good morning to all of you on the dais, off the dais, from the state of UP and my team.
And let me tell you, this is a new team which is coming to this NAM conclave. My mission director as well as myself are like 2.5 or 3 months old. So we are also trying to find the ropes, and I think this is an appropriate time wherein we get to know and understand what is happening nationally at the National Ayush Mission, and to understand how to take the things which have been going in the past in the state forward. Having said that, I would like to mention here that during the minister's deliberation, Honorable Minister of Ayush from UP had pointed out that state has a huge infrastructure existing in Ayush, which in fact we have 3,959 Ayush hospitals under different streams, of which 2,110 are in Ayurveda, 1,584 in homeopathy, and Unani 254. And for education, we have like 105 Ayush Mahavidyalayas, 8 government ones in Ayurveda, 17 in private sector. Unani, we have got 2 government and 13 in private sector. And for homeopathy, we have got 9 national homeopathic colleges and 2 in private sector. So this is a huge infrastructure which is already established. Besides that, the state of UP has established Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush Mahavidyalaya in Gorakhpur, which has started its OPD, and in times to come, it will be a full-fledged university providing accreditation, health services, OPD, IPD, and all the things. And Yoga Wellness Center, Health Wellness Center are also there in large number. So having with that in picture, which is already there, I would like to start my presentation with a very small film just to show what has happened infrastructure wise in UP, and to contextualize, like we were discussing about Health Wellness Center, with the Honorable Minister of Union Minister had said that they have to be completed by 2024, and 12,500 is the national numbers which are there. So in the state of UP, we have got 1,034 of them sanctioned, of which 750 are completed, and remaining is work in progress. So can we have the film, brief play of the film first, and then I have not made my presentation very heavy. Most of them speak pictorially, so it's easy for us to. Can we have the voice, please? आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आयुष मिशन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनके तन मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके अथक प्रयासों के परिणाम अब राज्य की जनता तक पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के नेतृत्व में आयुष सोसाइटी द्वारा अब तक 11 जिलों में 50 बेड वाले आयुष एकीकृत अस्पताल का लोकार्पण किया जा चुका है, जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा और योग के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यहां काय चिकित्सा, स्त्री रोग, शल्य चिकित्सा की ओपीडी, पंचकर्म, क्षार सूत्र, जलौका, अग्निकर्म आदि के साथ अंतरंग चिकित्सा विभाग में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा बागपत, बस्ती, रायबरेली, जालौन, बलिया में 50 बेड के अस्पताल लोकार्पण के लिए तैयार हैं। बुलंदशहर, फतेहपुर, उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर, हरदोई, संभल में
50 बेड के अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी पर है। ऐसे अस्पताल जल्द ही राज्य के हर जिले में खोले जाएंगे। यूपी में 1034 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 715 सेंटर क्रियाशील हैं। ये सेंटर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। इन सेंटर्स का उद्देश्य लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना है। यहाँ सेल्फ केयर यानी योग, दैनिक व्यायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या के पालन, अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान और रहन सहन अपनाकर स्वस्थ रहने के तरीकों से परिचित कराया जा रहा है, जिससे हम बीमार ही न हो। राज्य में 250 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के नव निर्माण का काम भी चल रहा है, जिन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यूपी में 2 आयुष महाविद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। ये महाविद्यालय वाराणसी और अयोध्या में होंगे। अयोध्या में महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अब राज्य की जनता को अपने गांव, कस्बे और जिले में हर वो स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है जहां उनके रोगों का निदान हो सके। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी मिल रही है। Thank you very much. So my presentation, I think I don't have to speak much because the brief film has mentioned most of the things. Nevertheless, I will just start with the presentation. Can we have the first slide? Yeah, so just quickly that earlier it was the Ayush and medical health department were together, and then as a result we didn't have many Ayush facilities at the district level. However, since 2017 when Ayush became a separate ministry altogether in government of UP, things have started moving. I think we can go to the next slide. So since we are projecting that how UP has showcased growth in infrastructure, that is our strength, and because that is the starting point, so to say. Once this is there and the manpower is there, then only the services which were not too widespread will happen all across the state, because as you have seen from the map, UP has got a lot of diversity within the state also, huge northwest, east and south of the state. So how we have actually worked upon and how we have ensured that this happens and translates into infrastructure very quickly is that land availability has been ensured for these 50-bedded, 30-bedded integrated Ayush hospitals, colleges and Ayush Health and Wellness Center. This we ensure that when we come for SAP, we take a certificate from the concerned district that the land is mandatorily available. You have the land records and the entry is there, which shows that the land is without encumbrance. However, saying that, because it will come further down in my presentation, that even after you have the land, there might arise a court case in during the execution. So that is something which I think all of us have to deal. However, we try that those availability of land and other clearances are there. Then proposal is included in the state annual action plan, which is approved by the EC and the governing body and sent to Government of India. Once the annual action plan is approved by the Government of India, then we try to see that the fund utilization is done timely. And for fund utilization, even for the newly approved projects, as we saw yesterday in the brilliant presentation by CCA Ayush, that you have to ensure that your funds are not more than 25% of the existing funds which you are seeking from Government of India. Only change which has happened is that 30% which was there earlier, that
30 days was for the release of the Government of India share and 40 days for state government share. Now that that is same for both the state government and the central government. We are having regular meetings with the implementing agencies that the completion timelines are adhered to. As I mentioned, that staff and all these is very important. Next, these are the pictures. So those were the facilities which have been constructed, and these are the availability of medicines, yoga which is being done, which under the directive in morning and evening. So that is integrated in these newly constructed facilities as well as wellness centers and other places. Next. And these are the different type of treatment which are available to the patient. Next. Unani. These are 50 bedded integrated hospitals which are ready to be inaugurated in 5 districts. And these are the ones under facilities under construction, which we are overseeing that they do. And this is the new Ayurvedic Ayush, two new colleges which have been sanctioned. The Ayurvedic College in Ayodhya, which is progressing. Varanasi, we have slight problem about the land case which I was mentioning. So we are following up keenly on that it gets resolved and the construction starts in earnest there also. Next. So these are health and wellness centers which have been approved for the state since 1920 to 22-23, 1034, out of which 715 are functional and remaining are in the progressive stage.
And this is a typical health and wellness center, how it looks like, which has all the facilities. Next, these are the different facilities which we are offering at the health and wellness center, which is OPD, medicine distribution, yoga, lab services, herbal garden, the Svedna, the outreach camp which I was mentioning, where the doctors go. It is not necessary that there would be a regular hospital there, but because of these outreach programs and camps, the people have started coming here, and the faith in the Ayurveda, Unani or homeopathy or Siddha is gaining momentum, and medicinal plant distribution. Next. So these new construction of 250 dispensaries is going on, which will be completed shortly, and these are the constructed ones. And this is the blueprint of Panchkarma huts for wellness and naturopathy center in Varanasi, which was approved in year 22-23. Construction is under progress. This is how it will look, and we are also very keenly following it up, because this is one of its kind in the state, and this will be like a blueprint for the others Panchkarma unit which we may set up in the state. Apart from all this which I presented, I would like to add on that there is one very good treatment of Gathia which we have initiated at the state level. We have started it in the State Homeopathy College in Lucknow, and which we intend to bring in the current SAP for extension of that unit or as a satellite unit in Varanasi also, because in Varanasi, because of BHU and other things, we have got faculties which are very good. So Lucknow will be the nodal, and let me share it with you and it gives me immense pride to share it at this forum, that is one center which is having not only patients from Lucknow and adjoining areas, but other districts of the states as well as other states also. So that we are trying, because this is one disease which is like ailing aging population and young population also. If we are able to break that mindset that apart from knee replacement, there is another treatment which is less painful, more acceptable, and more which is assimilated by body and accepted by it, I think we will make an immense contribution even with this one treatment which we are trying to explore and trying to develop it more holistically. And I would say this is what at least I would like to explore it and take it to the logical conclusion myself, because I feel that there are lots and lots of patients who we meet in daily life who are suffering from this, and because of our Ayush umbrella we can take care of them. So these are few things I like to share with all of you, and you can be in touch with us or let me know if you have any queries. Thank you. Namaskar. आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं अमृत योग सप्ताह पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदया जी ने आज हमारे Just like to add, so last year we focused on the places of religious interest, as you could see, Naimisharan, Varanasi, and other places, and Sarnath, which Honorable Minister had mentioned. So this time, the theme which has been shared by the Ministry yesterday, that Har Angan Yoga. So we will try to do it, because I don't think it would be a difficult thing, because last year we had initiated a program in which in the month of September, in which we wanted to take yoga to the families, and which we did in from September onwards, and I think that is what we will replicate, where we had first made done awareness about yoga to the schools, to the panchayats and all, and then taken it down to the family. So I think we will take it in right earnest, and we will ensure that this year Yoga Day is also celebrated with great fervor, and the intention that is aimed at in the office memorandum, DO, which has been shared for the Chief Secretary. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful insight, which will have a reflection on the state annuities to have an effective utilization and implementation of the activities. National Ayush Mission has been instrumental in successfully establishing the framework for development and propagation of Ayush system in country. A noteworthy practice implemented by the states under this mission is successfully making our system more acceptable to the general public. Now, I would like to invite Sri Dayanand P., Secretary Ayush, Government of Chhattisgarh, to have a presentation on one of their best practices, Siyan Chatan, elderly care. I welcome you, sir. Good morning, Des. Good morning, friends. It's really my proud privilege to have this opportunity to share one of the good practices in our state. Can you go to first slide? That practice is Siyan Jatan. First of all, without taking much time, one thinks what is this Siyan Jatan? We have taken this Siyan Jatan from our local language of Chhattisgarh. Siyan, what is Siyan? Siyan is a very respectful word which is used in families of Chhattisgarh for elderly persons in their families. Jatan means to take care of them. So together it becomes Siyan Jatan, which is a holistic healthcare initiative to take care of health of elderly people. About this Siyan Jatan, I would like to share facts and figures which we have. The data shows that every part of the world is witnessing population aging in India and around the world. It is because of increasing average human life in last century. As we see, elderly population of India has tripled in last 5 decades. And that is why we have taken this thing. As per the census 2011, the number of elderly people above 60 years is almost 104 million. And it is projected to be in many folds by 2050. Similarly, as per census 2011, in our state Chhattisgarh, the population of elderly people is around 20 lakhs, and at this point of time, it is about 35 lakhs. And what is the need? What was the need to take this initiative? Various national level health surveys reveals that increasing burden of morbidity is due to NCD, non-communicable diseases, lifestyle related factors,
degenerative changes, painful joints, disabilities, etc. All these affect the productivity and functionality in old age, and that compromises quality of life, and it does not discriminate with any kind of socio-economic status. Now, when we say ki we have started this Yan Jatan, so why only Ayush system of medicine for this program, this initiative Yan Jatan? As all of us know, Ayush system of medicine are well proven and known for the effective management of chronic diseases and disorders. Second thing, Ayush medicines and therapies are very gentle for this vulnerable age group. That is why they are coming to us. Increasing faith and interest of people in Ayush system of medicine, it is quite obvious. We'll see in later slides. Demands from public. The initiative was taken because of we are getting demands from public continuously. Last, availability of resources. In Chhattisgarh, we have 1,174 Ayush facilities across the state. That is why this initiative has been taken and it is doing really good. Now, what is our mission statement? Yan Jatan is an initiative to make Ayush services conveniently available and more accessible to elderly people. So, this is the tagline. Objectives. Our objectives are to provide accessible, high quality, long-term, comprehensive and dedicated Ayush services to the aging population. To promote the concept of happy and healthy aging. Creating a new scenario to build a fresh environment for a society for all ages. Next. And now about our strategies. First of all, when we go for any kind of new initiative, the first thing is, what is our approach towards community? So we took community-based approach for health awareness. Second thing, our Ayush department, doctors, they take home visits by health workers. For health workers, they do regular home visits. Dedicated services. Dedicated services is very must at Ayush facilities and therapy centers on designated days. That is Thursday, every Thursday. To ensure availability of equipment, consumables and drugs, as well as training material and IEC. A strengthening of Panchkarm facilities for the elderly. We have ensured this thing. Information, education and communication, that is IEC, using our mass media and other communication channels also. Continuous monitoring and evaluation of the program, that is being done at directorate level as well as secretariat level. Data collection for research in effectiveness of Ayush system of medicine in geriatrics. It is very important, and after this program, we are supposed to analyze and go further. Service packages at different levels. This is very important. In Chhattisgarh, we have Ayush dispensaries, Ayush centers, PHC, CHC. In these centers, we do OPD services, a special OPD on every Thursday, health education related to healthy aging, domiciliary visits for attention and care to homebound elderly persons, and provide training to the family care providers in looking after elderly persons. Arrange for suitable services from the PHC, CHC if required for elderly persons. Linkage with other support groups in the area. Daily yoga at our 240 functional identified SWCs. In the same way, Ayush wing, that is in district hospitals, apart from giving OPD services, we also provide Panchkarm therapies. And after that, district Ayurvedic hospital, we have 5 district Ayurvedic hospitals, 30 bedded, and 2 Ayurvedic colleges. We also give OPD services and Panchkarm therapies, inpatient services in these centers. Next. As you can see with this rising graph, we started this initiative in month of May 2022. And in a year, the OPD has gone up to 4 lakhs. So this rising graph can show the success of this initiative. These are some visuals. First, OPD care, you can see. Second, this is Panchkarm service.
The Panchakam services which are being provided to at different centers, we can see. Next, healthy aging counseling sessions. This is very important. I personally saw when I was director Ayush, I worked as director Ayush for 10 months. I visited some centers. I saw in college, at dispensaries, that our doctors, our health workers, they are providing good counseling to all old age persons. Next, community-based awareness activities. This is very important in a state like Chhattisgarh, where we have large remote areas and tribal population. So these people are coming to us and they sit with our doctors, our team, and they are getting benefited. Next. That is why in media there is a good coverage for Siyan Jatan program. There are only few cuttings. Now, what is our way forward? After this 1 year of Siyan Jatan initiative, we are planning to do something more. First of all, training of care provider, especially for elderly care. This is very important. That is why this thing can go to next level. Special daily OPDs. Now we are doing this OPD on a special OPD on Thursday only. Now we are planning to do it in Ayush hospitals in a routine manner for geriatric care. Reserved quota of medicines for elderly people to avoid any kind of shortage, because if we have shortage of medicines, in that case the whole program can be hampered. Aggressive IEC campaign for promotion of healthy and active aging through Ayush. We are planning, already we have planned actually, we are going to start very aggressive campaign for this healthy and active aging through our Ayush. Based on the data, more evidence-based Ayush initiative. Taking many review meetings and all, and having our data, we will try to do it more intensively. Can you play the video? मैं धनेश सोनकर ग्राम मुर्रा के रवैया हूँ। मैं ग्राम टेकारी में आयुर्वेदिक अस्पताल में हर 15 दिन में आता हूँ और मैं बढ़िया शुगर ठीक रहते कंट्रोल रहते। मैं कई अस्पताल से आ गए हूँ, बाकी बहुत परेशानी रही से। यह 15 दिन के 15 दिन ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की जांच करते और मैडम अच्छा दवाई देते। 3 साल हो गए मुड़ावत और मैं तंदुरुस्त हूँ, किसी प्रकार के अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़े। मोर नाम जोहत्री, मतलब 3 साल हो गए यहाँ आवत और 3 साल से यहाँ से गोली सूजी सब चलत है, बीपी उपी चेक सब चलत है। यहाँ से मोर आदमी भी लोको मार दे। 3 साल हो गए नीचे से मोर आदमी सुधर आगे के खटिया में हर कुछ वो साधन करत रही ना, तब खटिया से नीचे उतर जाते, हाथ के भरोसा ऐसे पैर में खिंचलत नीचे उतर जाते। और यहाँ के गोली सूजी अभी तक चला थे। 3 साल हो गए पूरा मोर आदमी लोकवा मारे और नीचे गोली सूजी मोर आदमी लिया थे, बाहर के में सूजी गोली नहीं चलावा। शासन ने पिछले साल यहाँ मई में एक योजना शुरू की जो बहुत अच्छी और जागरूक योजना है, सयान जतन कार्यक्रम करके। इस योजना के अंतर्गत हम लोग हर माह के हर गुरुवार के एक स्पेशल ओपीडी अरेंज करते हैं, जिसमें सारे सयान गांव के आसपास के गांव के सब लोग आते हैं और उनको हम एक विशेष चिकित्सा या विशेष देखभाल देते हैं। सियान जतन हमारे छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही अच्छी योजना है।
मई 2022 से हमारे चिकित्सालय में सियान जतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर गुरुवार के दिन हम 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस कक्ष में एक विशेष शिविर का आयोजन करते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 100 से करीब 120-130 मरीज हमारी हर ओपीडी में आते हैं। इस दिन आने वाले मरीजों को मुफ्त पंजीयन के साथ साथ अस्पताल में जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, एक्सरे, सोनोग्राफी और जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब फ्री में मिलती हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी बढ़ती संख्या और उनका स्वास्थ्यगत समस्याएं एक चिंतन का विषय है। इसको देखते हुए ही आयुष विभाग छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव पहल करते हुए सियान जतन के नाम से एक अभिनव प्रयास किया है। हमारे जितने भी संस्थाएं 1174 संस्थाएं हैं राज्य में, उन सभी के माध्यम से हम लोगों ने सियान जतन कार्यक्रम के माध्यम से उन बुजुर्गों में उनके स्वास्थ्यगत कारणों को ध्यान में रखते हुए एक प्राथमिकता का एहसास दिलाना, साथ साथ वो स्नेह का एक स्पर्श है उसको देते हुए जो उनका भावी जीवन है जो आगे का वो स्वास्थ्यगत दृष्टि से अच्छा हो, इस हेतु एक संगठित और एकदम से समेकित और डेडिकेटेड प्रयास किया है, जिसका परिणाम हमको बहुत अच्छे से मिला है। लगभग 1 वर्ष से ये हमारी एक विशेष जो I would like to share some other good practices with this August gathering. In our state Chhattisgarh, you must have heard about Kayakalp. Chhattisgarh is the first state who has initiated this Kayakalp, and currently this is in last phase of evaluation. Second thing is we are the first state in the country who has trained 70,000 Mitanins to take care of for giving them training about the basic Ayurveda and healthy lifestyle. So we are the first in that manner. Every year 292 block level and 28 district level Ayush Melas are being organized. More than 1.5 lakh population is getting benefited of awareness activities and Ayush treatments. Ayush Deep Samitis have been created at each facility for community participation in monitoring and planning of activities. Also, untied funds are also provided to them for local urgent needs. 12 Ayush polyclinics established where Ayurveda, homeopathy, Unani and yoga services are available under one roof. 460 co-located centers in DH, CHC or PHC with we have regular setup sanctioned from our government. Initiated NABH accreditation process for Government Ayurveda College Hospital. So it is really, I am thankful to NAM Ayush Mantralaya for giving me this opportunity to share our best practices. Thank you so much. Thank you, sir, for showcasing the accessibility of the Ayush system in delivering the Ayush healthcare at the grassroots level. Now, I would like to call upon Sri Keshavendra Kumar IAS, Special Secretary Ayush, Kerala, to deliver the presentation on various public health initiatives that is being carried out in the state. Welcome, sir. सर्वप्रथम मैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय, जिसे हमारे आदरणीय सचिव वैद्य राजेश कटोचा सर और उनकी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व दे रही है, को इस आयुष कॉन्क्लेव के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। भारत के विभिन्न राज्यों से आए आयुष के हमारे कर्मीगण, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की टीम, हमारे राज्य से आयुष की टीम जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नोडल ऑफिसर्स भी शामिल हैं और अन्य राज्यों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नोडल ऑफिसर्स, आप सभी को सर्वप्रथम केरला आयुष की टीम से प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन। केरला आयुष में मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने वहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल आयुष मिशन दोनों में 3-3.5 वर्ष के आसपास मिशन डायरेक्टर के रूप में सेवा भी दी है। तो उस अनुभव का जब आप सचिव के स्तर पर आते हैं तो फ़ायदा आपको मिलता है, एनएचएम की लर्निंग का भी कुछ फ़ायदा मिलता है। सर, शुरुआत में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। कल एनएचएम में विशाल चौहान सर की प्रेजेंटेशन हुई थी। कुछ बातें जो एनएचएम से हम लोग ले सकते हैं, एक तो कि वहाँ पे जितने का रिसोर्स एनवेलप है लगभग 50% के ऊपर में अप्रूवल दिया जाता है। तो अब अवस्था ये है कि वहाँ पे 100% से ज़्यादा फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर से वो बजट अलाउ कर दे रहे हैं। दूसरा सर कि
हमारी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की जो टीम है, अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बाकी बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि गाइडलाइन में जो पोस्ट आई हैं उसके अलावा स्टेट को जहाँ पे भी एचआर की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शनल में हम लोग पोस्ट दे दें और फ्लेक्सी पूल के तहत उनको अलाउ करें, या प्रोग्राम मैनेजमेंट में अगर सफिशिएंट बजट अवेलेबल है तो प्रोग्राम मैनेजमेंट और फ्लेक्सी पूल के कम्बिनेशन में एचआर अलाउ करने से मुझे लग रहा है एक्टिविटी और बढ़ेंगी और मॉनिटरिंग इंप्रूव करेगी। सर, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आपके सपोर्ट से हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट केरल में लगभग 5-6 साल पहले शुरू किया था, जो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से केरल में ही नहीं सभी राज्यों में इस्टेब्लिश हो गया है, और उससे फ़ायदा हो रहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आयुष सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके स्तर पे रिव्यू हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अन्य प्रोग्रामों से कन्वर्जेंस में हमें आयुष में सपोर्ट मिल पा रहा है। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं सर, और ये इस तरह की आयुष कॉन्क्लेव या काजीरंगा में जो वर्कशॉप हुआ था, इन सब चीज़ों से पूरी टीम को, हर राज्य की टीम को एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में केरल में भी कुछ विशेष टॉपिक जैसे पैलिएटिव केयर थ्रू आयुष, इन टॉपिक्स पे हम लोग कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो जो केरला के आयुष के 4-5 इनोवेशन पे हम लोगों ने किया दिखाना चाहूँगा। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड। हमारी केरला आयुष की टीम से मिशन डायरेक्टर और स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर के नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं। इस वीडियो को बनाने में सर इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, तो मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। Janni is one of our innovative projects, particularly infertility treatment through homeopathy, which got national attention. Next slide. It was started in Kannur district. Next slide, please. It was started in Kannur district Homeo Hospital 10 years back, and 2016 onward we have supported it through National Ayush Mission. Till this time, 2,658 deliveries
through this infertility treatment program from homeopathy has happened. Next. Each and every district hospital, 2 units are running, supported by 1 medical officer, 1 GNM nurse and multipurpose worker, and weekly 6 days OPs is being conducted. Next. Regular monitoring of this program is being done at directorate level, district level, and through National Ayush Mission. Next. So past 10 years and particularly past 4 years, we have seen a very good increase in OP positive cases, means pregnancy and statewide live birth in 4 years, supported through this infertility treatment program. Next. Next. So impact-wise, particularly infertility treatment is available in modern system, but cost-wise it is very high cost-oriented. It is available in government sector also, private sector also. But this side we have created a cost-effective intervention which was highly successful, and based on demand we have started in all the 14 districts this program, Janni program for infertility management. Next. And number of OP, for example, 2022-23 itself, total number of OP under this program was 42,958. So that is a significant number. That also shows that infertility is a area which numbers are going to increase for future, and whatever good intervention we are planning, that will be helping people a lot. Next. This was mentioned in Economic Survey 2018-19 also as a success story of Ayush. The way number of OP, number of success stories has increased and all, that caught attention of Economic Survey also, and it was given 1 full page coverage. Next. This is one more innovative program, Drishti program, and we are having a national program for control of blindness from modern system. Sir, I think that now it is time that we can have a replica of that program from Ayush. Drishti has created a good model, and this can be easily replicated in any state. It can be clubbed with our school health program. Next slide. So Drishti side also, particularly main focus is school children, all type of eyesight related issue, refractive error and these type of thing. Next slide. So particularly we are identifying whatever issues are there, refractive error, many cases of cataract where person is not preferring surgery and all, providing treatment to them and all. Next slide. So this program side, we are focusing 2 main categories. One is school children. Second is our elderly population, where we are getting a lot of eyesight related issues. Next slide. Impact side, we are normally for any program and all, we conduct our assessment and all, that what type of feedback we are getting from stakeholders and all, and what type of result we are getting. So visual activity significantly improved, and we are taking feedback and what type of result we are getting. So this is showing very good result and very good satisfaction among patients. Next slide. 75,000 plus students we have screened under this program, and this year particularly our school health program is also coming into picture, so we will try to increase this number further. And many students who were using glasses earlier, after treatment under this program and all, glasses were no more required. So this was a good satisfaction among the students also, their teacher side also. Next. Then again, one study we have conducted, particularly this too much mobile use or screen use by children, and these are the areas where we are saying that our school health program, once our team is in place under Ayurvedya, we will focus on this area, that mobile and screen overuse by a student, which is affecting their health also, and particularly eyesight related thing. So some study related to these things also we have done. Next. Cataract side, particularly many patients who are not preferring operation,
So our main focus is on them, and majority of those cases we have seen good improvement in their eyesight side and their satisfaction. Ideally we are advising them that whenever possible or wherever modern side they are getting feedback that they should go for surgery, they should go. But many of old people, they will have their own fear and these type of things. So these type of patients we are putting on treatment, and wherever they are okay after this treatment, okay. Otherwise we are again saying that they should go to modern side for surgery. Next. One more point, that all our program, we are trying for an integrated approach. Whichever area we are strong, modern side reference should come to us, and whichever area we feel that okay, from our side patient should be sent to modern system, we are saying that they should go. One research paper was also published on this program. Next slide. Next slide, please. Palliative care and geriatric care are two areas where even modern system had not reached to all the needy patients in our country. So this may be one area where we can focus in a big way from Ayush sector, and there is very good acceptance among patients. So palliative care, Kerala, we are doing through Ayurveda also, we are doing through homeopathy, yoga, naturopathy, anyway we include in all the places. Next slide. And Kerala, this palliative program is very well supported by panchayats. Their 2% budget is mandated for palliative care activity. So they provide mobility support and home care nurses also. Normally our team for home visit goes together. Modern system people, Ayush related people, they go as a team, and based on choice of a person or requirement of patient, whichever system is the most suitable, that system is being provided. Many times convergence of both the system. Patient may be taking medicines of modern system, and same time he is saying that I need Ayurvedic massage or mobility side some support, and also both systems are being utilized together also. Next. Next slide. So this side our homeopathy, Ayurveda, both are in play. Slowly we are saying that Siddha is having a very good concept of Marma Chikitsa, and also we are trying to integrate also in areas where Siddha is in demand. So homeopathy side, once a week OPD is being conducted in district hospital, and this primary palliative care facility where home visit and all is being conducted, secondary care, counseling, therapy, all things are being provided. Our recent palliative care policy also is in an integrated manner where all the systems based on patient's choice should cater to palliative patients. Impact wise, it is having a very good impact. Many of the patients who were earlier not knowing about Ayush facilities for palliative care, they came into the fold of this program, and good satisfaction was noticed among them. Next. This remarkable improvement in the this side and all, we are getting very good feedback that 63% said that they got remarkable improvement in their ailment or condition, quality of life has improved. Next slide. Homeopathy side also similarly, we are seeing very good results and all, and particularly economic benefit to patient, satisfaction to patient, and their side more demand that is coming. Even number of OP, number of patient is significantly increasing year by year. Now this year onward we are planning that can we go in a comprehensive manner, that having a database and to ensure that each and every patient who is needing Ayush services for palliative care, we are reaching to them and we are providing them necessary services. Next. Next slide. Arogya Nauka is one of our very visible type of intervention, we can say. Kerala, as all of you know, that we are having very beautiful backwater. So that is a very nice place to visit. But same time, that makes those people, their access to healthcare institutions and all becomes a problem. So in Kuttanad area, this Arogya Nauka is running through National Ayush Mission. A big boat is hired, where our Ayush team is going with medicine, medical doctor, pharmacist and team is going to 4 panchayat. They have fixed points and all where fortnightly they will visit and they provide their services and all. And there is a very good outtake of this program. Next slide please. So particularly we are reaching to the people who otherwise cannot come to government dispensary, our Ayush dispensaries or hospitals because of inaccessible terrain, as they are living to the near to backwater area, surrounded islands and all.
Next slide. So route chart and everything is publicized in advance. So whenever it reaches that fixed day schedule, whosoever patient from that area is reaching to that side, taking treatment, medication and all is being provided to them. Next. Catchment area is 4 panchayat and the total population is around 48,000. Next slide. We are reaching to approx 28% of these people yearly basis. So out of this 48,000 population, in 1 year, around 28% people are coming for availing this services, OP services and all they are taking. Next. Next slide. Next. Then Kerala is one area where we are getting lot of support from local self-government institutions. In 2019, when we conducted International Ayush Conclave, we had a conclave for local self-government institution. And it was for the first time where we gave opportunity to all the LSGI to showcase that whatever innovation they have done in Ayush sector, it was done at district level, regional level, and then selected entries we have called at a state level, where they made presentations and they were honored by our CM and health ministers. So LSGI side, particularly in Kerala, we are getting support like medicine, support like HR, dispensary related minor civil works and all they are providing support. Some places where we are providing fund from Ayush Mission and some fund is being given from LSGI also to make building and everything in a comprehensive manner. So all type of support, it is a transferred institution to them for primary health care. So joint ownership by Ayush department and LSGI is there and lot of local support. Many places and all, if medicine requirement is yearly 10-15 lakh, department may be providing 2-3 lakh and remaining fund is coming from panchayat as their plan project. Next. Next slide please. And COVID-19 pandemic time, that was the time I think entire country, Ayush services or requirement of Ayush was felt by everyone. I remember that time Secretary Sir's level guideline were given that what are medicines to be used from homeopathy, Ayurveda and Ayush systems. It may have been one of the most widely viral document on internet, I can say. That each and every person, even we might have sent to 100 or 200 groups and all, and similarly it was coming from any other group to us. So there may not have been many people in country who might not have taken homeopathy side arsenic album or Ayurveda side giloy, ashwagandha and all the thing. So this has shown that Ayush is very much relevant, very much required, and in the time of emerging diseases and epidemics and all, its significance is much more than. Kerala side, with support of LSGI, we have made our plan of action, and homeopathy and Ayurveda medicines, they were reaching to all the patients and all. And we have conducted one research study also that Ayush interventions, particularly Ayurveda, on quarantine patients and their satisfaction. So this was a widely acclaimed, people have appreciated effort taken by Ayush department at the time of COVID in entire country, particularly in Kerala. Next. Next slide. So there is one very innovative hospital in Kerala focusing on child health and adolescent health, Purgateri Child and Adolescent Care Center. I can well say that this is one of its kind model for Ayush District Early Intervention Center. So this will be also one area where maybe this year or supplementary we will come with a pilot project. Modern system is having District Early Intervention Center where care is provided to 0 to 6 age group. So now it is time that we can set up our own Ayush District Early Intervention Center, and this is a related model, though we are focusing on 0 to 20 age group and all the developmental disorders, cognitive problem, developmental problem of children are being addressed, and there is very good result, very good demand from public about services. Concerned district panchayat, local self-government body, they are providing all type of support, some funding support from their side, some funding support from National Ayush Mission and plan side also. And there are many takers of this program. This has got some good awards also, and IIM Calicut has made a case study also on this program. And LAG side, a lot of fund for these programs have been, this program particularly has been provided in past years, the detail of these programs. Next.
So particularly Kerala side, Ayush in past, once Ayush Mission came, before that also our Directorate ISM and Directorate Homeopathy, Director Ayurveda Medical Education and Homeopathy Education, they were doing good work. But after Ayush Mission came, we are making convergence, taking support of other department, taking support of LSGI. And as Dayanand sir mentioned, sir, Ayush Kayakalp is certainly an area required. Kerala also we are working on that guidelines, guideline modification and customization of guideline. So Chhattisgarh has already initiated that project. I compliment Chhattisgarh team. And that is an area which can be a precursor for NABH accreditation. Any institution which is doing good in Kayakalp, certainly their motivation for quality accreditation will be higher side and they will quickly get NABH accreditation. So with this thing, sir, I close my presentation, and once again I thank Sachiv Vaidya Rajesh Katocha sir and entire team, JS Kavita madam, JS Sarma sir, and all our colleagues from different part of states. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for showcasing such an innovative practices in your state. Persistent challenges in the communities living in the different geographical areas and vulnerable population are required to be provided with these adequate facilities, and these are being presented here. Now, I would like to invite Dr. Pankaj Pandey, Secretary, Government of Uttarakhand, to present the best practices. सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यूपी, छत्तीसगढ़ और केरला के जो हमारे अधिकारी यहाँ पे हैं उनके प्रेजेंटेशन के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि ये एक ऐसा फोरम है जहाँ से हम लोग एक दूसरे स्टेट के जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उससे सीख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है हम लोगों को कि हम लोग आपस में एक दूसरे के जो अच्छे काम हैं उससे सीखें और पूरे देश के अंदर उसको रेप्लिकेट किया जा सके। तो केरला के बारे में जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि केरला तो ऑलरेडी आयुष के मामले में, आयुर्वेद के मामले में काफ़ी आगे है और हम लोग उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा केरला के हमारे साथी ने बताया, वो मैं खुद भी हेल्थ में रेगुलर एलोपैथिक साइड में 5 साल मैंने काम किया स्टेट गवर्नमेंट में, और मैं खुद MBBS डॉक्टर हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड एलोपैथी का रहा है, बहुत टाइम काम भी कर लिया मैंने, और 1 साल से मैं आयुष में हूँ अपने राज्य में। तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है। और जब मैं अपने प्रदेश के आयुष के डॉक्टर्स को कुछ कहता हूँ तो उनको ये फिर मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर होके तुम्हें ये बात कह रहा हूँ करने के लिए, तो फिर इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो क्योंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने सब ने देखा, जैसा पहले भी बताया गया, कि आयुर्वेद की और होम्योपैथी की क्या स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज़ किया। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर 100 नहीं तो 99% लोगों ने तो किसी न किसी टाइम कोविड में आयुष का बेनिफिट जरूर लिया होगा। तो ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है आयुष विभाग के लिए, आयुष में जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, कि हम इसको अब यहाँ से आगे हमको ले जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो वापस पीछे की तरफ नहीं जाएं, हम आगे की तरफ जाएं। तो हमने अपने राज्य में जो अनुभव किया उसके आधार पे 2 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए, छोटे चेंजेस किए हमने अपने सिस्टम में, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, इनकरेजिंग रिज़ल्ट है। तो वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसा आप विजन देख सकते हैं, हम लोग उत्तराखंड को आयुर्वेद के मामले में, आयुष का एक विंग आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के मामले में हम उत्तराखंड को वर्ल्ड मैप पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आयुर्वेद का नाम लिया जाए तो उत्तराखंड का नाम उसके साथ लिया जाए। उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा आप जानते हैं, आयुर्वेद की उत्पत्ति उत्तराखंड से हुई और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सब का मेजर सोर्स उत्तराखंड है। तो हम उसको यूटिलाइज करके उत्तराखंड को दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये 2 इनिशिएटिव है हमारे, आउटरीच कैंप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग। आप ये कहेंगे कि आउटरीच कैंप तो पहले से ही चल रहे थे, इसमें क्या हमने ऐसा खास कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है। आउटरीच कैंप्स हर स्टेट लगातार करता रहा है, करते रहते हैं, आगे भी करते रहते हैं। हमारे आउटरीच कैंप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आगे। नेक्स्ट चलिए। आउटरीच कैंप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कोविड का टाइम आया उसके बाद से आयुर्वेद और होम्योपैथ इसकी जब ज़रूरत बढ़ी तो लोगों को और
सच्चाई बताना और आयुर्वेद और होम्योपैथ की जो स्ट्रेंथ है वो बताने का, क्योंकि परसेप्टिव हैं लोग, उनको इसी यही मौका है जब हम पहुंच सकते हैं और बता सकते हैं उनको। तो ये मेजर हमारी आवश्यकता थी। और जो हमारा आउटरीच कैंप है उसका थोड़ा डिफरेंस, जैसा मैं अभी बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। जो ऑब्जेक्टिव है आप जानते हैं कि लोगों तक पहुंचना, लोगों को अवेयर करना और तमाम और चीज़ें करना। नेक्स्ट। स्ट्रेटजी ये कही हमने कि जैसा आप में से सभी लोग जानते हैं कि आयुष में जहाँ सिर्फ ओपीडी होती है वहाँ पे डॉक्टर्स 2 बजे के बाद खाली हो जाते हैं। 9 से 2 या 8 से 2 या 8 से 3, 9 से 3 की ओपीडी होती है, उसके बाद काम नहीं होता है आयुष के डॉक्टर्स के पास, क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पेशेंट नहीं जिनको देखें। तो हमने ये प्लान किया कि हमारे जो डॉक्टर हैं आयुष के फील्ड के, वो हफ्ते में 2 बार जो उनका कैचमेंट एरिया वहाँ पे किसी भी एक गांव में जाएंगे, अनाउंस करके जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। वो स्कूल में, पंचायत घर में, आंगनवाड़ी में, जहाँ उनको ठीक लगे, प्रधान के यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं जाके। वो लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे हों, बच्चे आएँ, वहाँ पे वो शेयर करें, अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें। और अगर कोई ऐसा केस आता है, ऐसा कोई पेशेंट या ऐसी कोई चीज़ आती है, तो उनको वो अपने हॉस्पिटल में बुलाएं और फिर बाकी फॉलोअप करें। तो ये डिफरेंस है हमारे आउटरीच कैंप में कि हमने जो हमारा जो वर्किंग आवर है उसी को इस्तेमाल किया है और हमने कंपलसरी किया है। उसका रिजल्ट भी हम आपको बता रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये सर्विसेज हमने दी, वहाँ पे कोई हमने एक्स्ट्रा फंड नहीं खर्च किया, कुछ नहीं किया, बट डॉक्टर को कहा कि आप वहाँ जाएंगे और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और जो जो चीज़ें आप ले आ सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध चीज़ें वो आप लेके जाइए और वहाँ पे कर दीजिए। ये सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं वहाँ पे फील्ड में। नेक्स्ट। 6 महीने के अंदर हमने 2,500 से ज़्यादा कैंप किए हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड छोटा राज्य है, टोटल 1,25,00,000 की आबादी है और 3.25 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हम बेनिफिट दे चुके हैं उनके डोर स्टेप पे। पहाड़ हमारा मैक्सिमम पोर्शन पहाड़ है, वहाँ पे एक गांव तक जाना ही बहुत मुश्किल है, कई जगह पैदल भी जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में एक गांव में अगर 10 लोग भी एक साथ बैठ रहे हैं डॉक्टर के पास आके, तो यही हमारा अचीवमेंट है। तो हम वीकली हमारे पास गूगल फॉर्म है, उसमें हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं हर डॉक्टर का, हर यूनिट का, कि वीक में कितने कैंप किए, कहाँ पे किए, कितने पेशेंट आए, क्या हुआ, क्या किया गया, पूरा हमने सेटअप किया हुआ। वो हमारे पास फीड आते रहता है नीचे से। तो ये एक यूनिक तरीके का था जो हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया। बाकी जो एक्चुअल आउटरीच कैंप होते हैं, जो बड़े मेले होते हैं, वो तो हमारे लगते ही रहते हैं। कभी जनता दरबार हुआ या माननीय विधायक का कहीं पे हुआ, माननीय मंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, या डीएम कहीं पे जा रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारी टीम जाती ही है, वो डेडिकेटेड टीम हम अलग से भेजते हैं। लेकिन ये अपने ही कैचमेंट में अपना प्रचार, अपनी विधाओं का प्रचार करके लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाना कि लोग आपके सेटअप में, आयुष के हॉस्पिटल में आएँ और आपसे बात करें और आपकी सर्विसेज लें। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है काफ़ी। दूसरा एक ये भी चीज़ है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बताया मैं हेल्थ में भी काम कर चुका हूँ, तो जो आयुष का जो सेक्टर के जो लोग काम करने वाले हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे बाकी लोग, वो बहुत मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए। अभी भी बहुत ज़्यादा फील्ड में उनका मोटिवेशन नहीं है, बहुत उनको एंथू नहीं है कि हम कुछ करके देंगे। तो जब ये जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग आते हैं, तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है। हमारा ये भी काम है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट करें, पब्लिक तक जाने के लिए बोलें, और जो हमारे लोग हैं अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे वो तो फिर वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो वो एक साइकोलॉजी भी है, उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है, पब्लिक को भी और हमारे लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट। ये इम्पैक्ट आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और फीडबैक आने लगा, लोग जानने लगे, हमारे सेंटर्स पे लोग आने लगे, हमारे जो हॉस्पिटल है उनकी ओपीडी बढ़ गई, उससे लोग सर्विसेज लेने लगे, जिनको जहाँ ज़रूरत लगी उनको पता चल गया कि अच्छा होम्योपैथी में ये अवेलेबिलिटी है, आयुर्वेद में ये अवेलेबिलिटी, तो हम चले जाएँ सर्विसेज ले लें, ये सारी चीज़ें कर लें हम लोग। और कैसे हम जो आयुर्वेद में जो प्रिवेंटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट है, या जो हम बीमारी होने से कैसे रोक सकते हैं, अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से क्या करें क्या नहीं करें, उसको भी लोगों को समझ में आने लगा और वो भी लोग इस्तेमाल करने लग गए। नेक्स्ट। ये फ्यूचर स्कोप हमने लिखा है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मर्म की बात हुई, मर्म में जो हमारा स्टेट है, हमारे जो प्रोफेसर सुनील जोशी जी हैं, जो हमारे वाइस चांसलर हैं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, वो मर्म के एक अथॉरिटी हैं वर्ल्ड ओवर, तो उनको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट, जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं मर्म में, तो मर्म को भी हम लोग पुश कर रहे हैं, क्योंकि मर्म में कुछ नहीं लगता। जो एक्सपर्ट है वो मौके पर जाके बहुत सीवियर पेन, मुझे ही एक दिन बहुत ज़्यादा नेक में प्रॉब्लम हो रही थी, एक मर्म के हमारे डॉक्टर, उनको मैंने बुलाया, वो आए, 3-4 मिनट के अंदर उन्होंने
पेन मेरा 25% कर दिया। तो उसको भी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसा मैम ने बोला था कि गठिया और उसके रिलेटेड जो होम्योपैथी को बाकी ट्रीटमेंट है, तो मर्म में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम फील्ड में भी मर्म के लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, और फील्ड में जाएं और वहाँ पे सर्विसेज डिलीवर कर दें। हैं? मर्म एक तरीके का एक स्पेशलाइज्ड टाइप का प्रोसेस होता है। उसमें जो मर्म का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो ये मानते हैं कि बॉडी के हर अंग का कोई कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को प्रेस करके वो रिजल्ट देते हैं। ये एक्यूप्रेशर तो मतलब एक्यूप्रेशर तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, लगभग मिलता जुलता समझिए। तो मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मर्मा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ पॉइंट जो यहाँ पे एक्सपर्ट है प्लीज बता सकते हैं, प्लीज आप बताइए। कर दिया है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो उसके हिसाब से ये सुनील सर ने ट्रीटमेंट डेवलप की है कि आपका कोई भी पॉइंट तल हृदय मर्म जो वो सिंपली सिखाते हैं, यहाँ पे तल हृदय मर्म है, तो हमारा हाइपरटेंशन है तो आप 5 मिनट उसको प्रेस करेंगे और पेशेंट का बीपी चेक करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि उसका 10 पॉइंट या 20 पॉइंट डाउन हो गए। उसी तरह वो बहुत सारे डिसीज़ में देते हैं। हमने उनसे 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो हम बहुत छोटे छोटे डिसीज़ में देते हैं, जॉइंट पेन में या फिर ये हाइपरटेंशन में है, डायबिटीज़ में है। यहाँ के 2 पॉइंट उन्होंने सिखाए हैं कि उससे आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये ऐसे एज एक्यूप्रेशर पंक्चर के जो पॉइंट है उसी तरह का थोड़ा है, लेकिन इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपने थंब और उंगली से उसको प्रेस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। थैंक यू। एक्चुअली अभी हाँ, I have done advanced course in मर्म थेरेपी। आई एम मिशन डायरेक्टर आयुष यूपी। हमारे बॉडी में ना 107 मर्म पॉइंट्स हैं। ये मर्म पॉइंट्स सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जहाँ प्रेस करने से उसका जो कंसर्न जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छे से होता है। तो जस्ट बाय प्रेसिंग एंड डायरेक्टिंग द एनर्जी इन दैट बॉडी ऑर्गन वी हील दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। यही है मर्म चिकित्सा। इनफैक्ट हम लोग G20 का एक हमारा इवेंट था रामनगर में, नैनीताल में, तो वहाँ पे जो हमारे EMC थे वो उनका फ्रोजन शोल्डर था, वो स्लिंग विंग लेके आए थे। मैंने कहा क्या यार तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, मेरी इतनी टीम है, इनसे बात करो। वो बंदा जाके 10 मिनट के बाद ऐसे हाथ करके आ गया। मैंने क्या हुआ, बोला साहब एकदम आप मेरा ठीक हो गया। तो मैंने कहा 2 दिन तुम यहाँ पे हो, 3-4 बार करवा लो। तो वो अभी भी फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि सर आपने तो चमत्कार करा दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, वो जो हमारी विधाएं हैं, जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स हैं, उन्होंने किया है। तो हम लोग को प्राउड होना चाहिए, हम जो लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं उनको। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये एक छोटा वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं। हमने जो कुछ और भी बड़े कैंप्स किए और जो छोटे वाले उनका भी हम बताएंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, खासकर बच्चे लोग, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। और जो ज़्यादा दर्द की गोली खाते हैं उनके गुर्दे खराब होने की बहुत संभावना होती है। हमारे देश में गुर्दे खराब होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। तो देखिए अभी 3 डिग्री आपको है और तभी आपको महसूस होना है। तो अगर आप वैसा करेंगे तो आपको काफ़ी आराम, ठीक है। फिर आप हॉस्पिटल आएंगे तो हम आपका रेगुलर आपको इमानी थेरेपी देंगे। दूसरे बात के ऊपर पहला उंगला, दूसरा उंगला, पहला करके इसको घुमा दिया और ऐसे से दबा दिया। फिर दोबारा डिप किया,
डिस्कशन होता है साफ पानी में होता है सर। मोहम्मद असलम सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मुंडिया कला। आज यहाँ पर अस्पताल से कैंप लगा है योगा के लिए। इससे बच्चों को क्या बड़ों को भी फायदा है। आपको ये खेड़ा खाल में आयुर्वेदिक शिविर में आई हैं, आज आपको क्या परेशानी थी और आज आपको क्या लाभ हुआ? मेरी परेशानी थी, हाथ में ऊपर नहीं कर सकती, अब मेरा हाथ ऊपर भी रहा नीचे भी रहा। कैंप आयोजित किया है, इससे सचिवालय कार्मिकों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए आयुष के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी। आयुर्वेदिक जो कोर्ट में जो चिकित्सालय है वहाँ से यहाँ पे हमारी जो मैम है यहाँ पे पहुँचे हुए अपने कर्मचारियों सहित, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आज लाभ लिया है। आपने जो कैंप लगाए थे ना मेरे गांव में, और उसके द्वारा जो हमें दवाई मिली उससे मतलब काफ़ी आराम है। मेरे भी कमर दर्द और पैरों में जो दर्द था वो दवाई खाने से काफ़ी ठीक है, और गांव वालों की भी दवाइयों से मैं काफ़ी To me, it was very special to do here yoga. I couldn't hardly look at you, sorry, because it was such magnificent surrounding. पूर्व प्रशिक्षण देने से हमारे विद्यालय के बच्चों में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमके लिए पूरा इलाज हो रहा है, हर चीज़ का इलाज हो रहा है, बढ़िया हो रहा है हमके लिए। तो जमाल जी और मैडम शर्मा जी, डॉक्टर बुनियाल जी, उन सबको धन्यवाद भी करता हूँ अपना तरफ से कि आप सबकी सेवा में जुटा। ये लोगों ने एक इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई ने कैंप लगाना चाहना हो, तो हम बोले भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दूसरा मैं शेयर करना चाहता हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत डॉक्टर्स बहुत मोटिवेटेड नहीं थे, और बहुत सारा वो अपने जब डिग्री कोर्स किया या पीजी कोर्स किया उसके बाद उनको कभी भी 10-15 साल में कोई मौका नहीं मिला, बहुत प्रैक्टिकली साउंड नहीं थे। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं है, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ के नॉलेज नहीं है। तो हमने ये ट्राई किया कि सारे लोगों को उनके पोजीशन के हिसाब से या सीनियरिटी के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाए, और पिछले साल से हमने स्टार्ट किया और हम इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, पंचकर्म सहायक से लेके जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर तक हैं, सबको हमने ट्रेनिंग कराई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कराई, फाइनेंशियल ट्रेनिंग कराई, प्लान करके। डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने जोधपुर भी भेजा, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग कराई। प्राइवेट जो हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ भी हमने टाइप किया, जो अच्छा काम कर रहे हैं। केरला के कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो केरला में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हमने अपने यहाँ बुलाया, अपने यहाँ के लोगों को केरला भी भेजा और कई और संस्थान में भेजा कि जो मोटिवेशन और स्किल और कॉम्पिटेंस अगर हम मैच नहीं करा पाएंगे तो फिर पब्लिक का ट्रस्ट फिर से खत्म हो जाएगा, अगर हम जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमने प्रयास किया। तो दूसरा हमारा जो आप उसको मतलब मैं बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहूँगा, बट हाँ एक्चुअली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। बाकी जो उसका रिजल्ट आएगा वो निश्चित रूप से आगे स्टेट को ले जा सकता है। नेक्स्ट हाँ प्लीज़। जानना चाहता हूँ कि क्या मर्म चिकित्सा या एक्यूप्रेशर या प्राकृतिक चिकित्सा के जो एक्सपर्ट हैं उसको हम लोग आयुष का जो मेडिकल काउंसिल है उसके तहत निबंधित कर सकते हैं या नहीं है? अन्य राज्यों में क्या प्रैक्टिस है? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब टी ब्रेक वगैरह हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो बेटर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने बताया कि हमने सब तरह की ट्रेनिंग कराई, इसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग और फाइनेंशियल ट्रेनिंग, और अपने जो स्टाफ हैं जो प्रैक्टिकली पंचकर्मा करते हैं या और जो बाकी प्रोसेस करते हैं उनको भी हमने दोबारा से ट्रेन किया, पॉलिश किया, रीस्किल किया, रीट्रेन किया। नेक्स्ट। और आउटकम आप देख सकते हैं, अगर आप अब उनसे बात करें जो पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, वो फील्ड में जाने से नहीं डर रहे हैं, पेशेंट से बात करने से नहीं डरते हैं, और एक अच्छा माहौल है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारे लोगों की। नेक्स्ट। जो हमारे प्लान्स हैं वो हमने ये प्लान किया कि 3 साल के अंदर अपना 100% जो हमारा स्टाफ है डिपार्टमेंट का उसको हम ट्रेन करेंगे,
और रोटेशन ये प्लान रहेगा। अब इस साल का हमने पूरा शेड्यूल कर दिया है कि 1/3 हमारे लोग ट्रेन हो जाएं और कंटिन्यूस फिर हर साल, हर तीसरे साल में उन सबको हम ट्रेन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने पहला एक इनिशिएटिव लिया, हमने एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी एक हफ्ते की आयुर्वेद की, बेसिक आयुर्वेद की ट्रेनिंग करी है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कोलेबोरेशन में। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ही हिमसेल्फ इज एलोपैथिक डॉक्टर, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम एलोपैथिक साइड के डॉक्टरों को आयुर्वेद की ट्रेनिंग दें कि फील्ड में जो कॉम्बिनेशन की बात होती है, जैसे हम बात करते हैं पेशेंट है, डॉक्टर है, पेशेंट को इससे नहीं मतलब है वो डॉक्टर क्या पढ़ के आया है, पेशेंट को ठीक होने से मतलब है। तो अगर डॉक्टर 2-3 विधाओं का, 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करके पेशेंट को ठीक करता है तो सबकी पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करके ठीक करना हमारा दायित्व है। तो उसको देखते हुए हमने जो हमारे गवर्नमेंट के जो प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस के डॉक्टर थे, उनको हमने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई है अपने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के माध्यम से। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जो बेसिक आयुर्वेदा है कि फील्ड में जब वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें, उसके साथ आयुर्वेद के प्रोसेस और चीज़ें भी बता दें कि दिनचर्या ये होनी चाहिए, योगा ऐसे करना है, बाकी क्या खाना नहीं खाना, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि वो भी हम आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक बता पाएँ कि कितना हम उसको ले जा पाए। और हमने ये प्लान किया है कि हम 1 हफ्ते का कोर्स अभी किया है, उसको हम 2 हफ्ते का करना चाहते हैं। अल्टीमेटली उसको हम 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं। वो हम फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका रिकॉग्निशन और एक्रेडिटेशन चाहेंगे। स्टार्ट किया अभी हम लोगों ने। तो ये हमारा एक अभिनव प्रयोग है जो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी देश में हुआ होगा। तो ये भी हमने किया और बहुत जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो भी बहुत खुश रहे हैं, उनका भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। नेक्स्ट जो हम लोग, हमारा प्लान है, हम लोग स्टेट को, उत्तराखंड स्टेट को आयुर्वेद का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आराम आया है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा था, ना ये सीढ़ी चढ़ रहा था। अब मुझे आराम है। ये प्रोफेसर सुनील जोशी जी हैं जो 22 साल के इनके हाथ डालना है, हाथ डाल के ये बाहर निकालना है, खींचना थोड़ा। आहार विहार का भी परामर्श देते हैं। जैसे आपको बताया प्रकृति के हिसाब से हमें कौन सा आहार खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को बताया। एक विशेषज्ञ से टेली परामर्श भी देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाड़ी चल रही है, मैंने खड्डा भरने के लिए थोड़ा साफ किया, उसमें ये गाड़ी आज तो नॉर्मल है। कितने महीने पहले आपने जांच कराई? 3 महीने पहले आप जांच करवाई थी, 4.5 निकली। तो मैंने आयुर्वेद से ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं और उसी से आज आपकी शुगर लगभग 111 आ गई है। और नेक्स्ट एनसीडी रिवर्सल की हमने ट्रेनिंग कराई और उसमें हम एक स्टडी भी हमने कमीशन की है कि जो हमारे जो डॉक्टर्स एनसीडी रिवर्सल में जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो अपने पेशेंट को ट्रैक करें और 6 महीने बाद हमको बताएं कि कितने पेशेंट को उन्होंने रिवर्स किया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ उनकी कम हुई या ख़त्म हुई है, जिससे फिर हम उसको
डॉक्यूमेंट करके फिर और लोगों को हम ट्रेन कर सकें। माधव बाग एक संस्था है जो पुणे की संस्था है, उन्होंने ट्रेन किया है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, ये हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है इस साल का, जो हमने अलग अलग कैटेगरी के अपने लोगों के लिए कर रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू। Thank you, sir, for showcasing the enhanceable, accessible, generalized healthcare and Ayush-based intervention through various initiatives. Now, I would like to invite Sri Bhagwat Singh, Mission Director, Rajasthan, to have a presentation on their best practices. Good morning, all distinguished members of the panel and all the concerned professionals from the various Ayush departments from various states, various organizations participating, academia and healthcare organizations who have gathered here today for this Ayush Conclave. I especially give thanks to the Honorable Minister Sir, Secretary Sir, Government of India and Joint Secretary Ma'am for organizing such a marvelous conclave and providing the platform to all states to gather here and learn about the innovation and experience sharing. I welcome you all and thank you for taking the time off to join us in these deliberations. I would be glad to tell you that in Rajasthan we have the biggest infrastructure in terms of Ayush facilities in the country. I would like to point out some of our infrastructure, as we have 120 Ayurveda hospital in our state, along with 79 block Ayush hospitals, 33 yoga and naturopathy hospitals. We have 13 mobile medical units, and when we talk about the educational institute, I think Rajasthan has the second oldest separate Ayurveda university established in Jodhpur, and we are also right now excelling in the field of education, Ayush education and the research. We have established an Ayush research center recently in Rajasthan, providing the platform in Ayush research, and right now we have got the letter of permission from Ministry for opening 6 new Ayush colleges in our state. Along with, we are developing 2 centers of excellence in Panchkaram, costing 50 crores each. So this is a great initiative which we are going to take in the Ayush field, and along with, we are also going to open a regimental therapy center of excellence in our state. We already have drug testing laboratories, and from the infrastructure point of view, we have separate directors for homeopathy, directorate for Unani and directorate for Ayurveda. When we talk about the best practices in the states, I would like to focus 2 best practices in our state. One is Aanchal Prasuta Center. So in order to reduce the maternal and infant mortality rate in the state, right now we have 45 regional maternity centers being operated in various Ayurvedic hospitals and dispensaries in all the districts of the state. And we are running them since 2013 and 14. So at present, we have rupees 1 lakh provision for the diet, rupees 2 lakh for the medicines, and rupees 60 lakh for machinery and equipment per general maternity center. The targeted group and the beneficiaries are pregnant
and lactating women, adolescent girls and children from 0 to 5 years on these Aanchal Prasuta centers. Our selection method is the ASA and Anganwadi workers help us in this program, and they motivate pregnant and adolescent girls from the population coming under the catchment area of the center to visit these centers. So under the concept of Nirogi Rajasthan, we provide various type of services to the pregnant women during prenatal and postnatal period. So in prenatal period, we provide them the supplement diet with milk, porridge, sesame oil, honey, soybean, etc. And we provide them at an interval of 10 days up to 8 months. And the purpose of providing these diet and medicines, that there should be no lack of proper nutrients at the time of delivery, and there is no deficiency of hemoglobin at the time of delivery to the both mother and to the child. And the prenatal drugs are mostly used are Praval Pisti, Akik Pisti, Ashwagandha, Abhipittikan Churn, and we also provide them at the interval of 10 days again. And the purpose of providing all these, the consumption of Balya medicines are needed to prevent the difficulties of pain and stress during the time of the delivery and to regain and rejuvenate the body of the woman after labor pain. Again, we provide the postnatal cares, and the diet plan and the medicines are our Satavari powder, Vidari Churn, Panchkol powder, Dasmul Kwat, Dasmul oil, Saubhagya Sunsti Pak. And the purpose behind this, the providing healthy diet and care to the mothers, to encourage mother to feed breast milk to their children from birth itself, to provide treatment, healthy diet and medical facilities in case of shortage of breast milk. So healthy and nutrient diet and treatment of diseases in children such as worm infestation and malnutrition etc. are also given. Along with, we provide Sarnprasan to children from 0 to 5 years to boost their immunity. Secondly, at Aanchal Prasuta Center, anemia in adolescent girls is tracked out, and the selection of the girls on the basis of the symptoms with the help of ASA and Anganwadi workers. In this, we provide the Dhatri Loha and Navesh Loha as a dose. Thirdly, the child health. We cover 0 to 5 years old children in this program and provide them the Swarn Prasan, and especially on the day of Pushya Nakshatra. As we all aware that the Pushya, according to our ancient scriptures, Pushya Nakshatra is the day, at that day which we get the power and efficiency in our body. The second program, that is the Geriatric Disease Prevention Center, Jaravastha Vyadhi Niyantran Kendra, that we have started in Rajasthan in 2014 and 15. As in our in previous session, Secretary Sir from Chhattisgarh also mentioned Sian Jatan program. So sporadically, we all different states are separately going for all these. They are coming under, and they are focusing on the geriatric care. So we can uniformly, now it's the time that we can uniformly devise a nationwide policy regarding the geriatric care. As we all know that mostly even in allopathic medical college, there is no separate geriatric medicine department still. In few colleges it have started right now, but it is good to see that we have started it in the Ayurvedic department and in our Ayush department. So it is a good initiative, and I would like that in all our state we can plan a nationwide policy for this purpose. So in Rajasthan we have total 45 geriatric centers. We have identified 45 dispensaries and hospitals. The aim of such center is benefiting
through Ayurvedic medicines and prevention of the disease occurring in the old age. At these centers, firstly we provide the counseling and provide with some medicines. We can say Ekangvir Rash, Ashwagandha, Brahmarasayan, Yogaraj Google, etc. And the purpose is the alleviation of rheumatic disorder in old age and prevention of disease by Balya medicines. Now second part, the treatment of senile diseases, and we provide the medicines Triphala powder, Swarnvatista and Purnaman Mandur. And the purpose is the prevention of degenerating old age problems. Now I would like to skip it to the last slide where we can show some pictures. Here we can see some Panchkaram centers, Aanchal Prasuta centers, health wellness centers, and even we provide the Ayush medical facilities in the different campaigns organized by the state government, like we can say Prasashan Gaon Ke Sang Abhiyan. We send a dedicated team to the campsite, and in the next picture we can see the how our doctors are counseling and provide screening for the anemia in adolescent girls. So I think these two practices, Aanchal Prasuta Center and Geriatric Prevention Care Centers, which we want it as a nationwide policy, and I'm glad and thankful to the Secretary Sir and Joint Secretary Ma'am for providing us the platform. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. Under National Health Policy 2017, the role of Ayush therapeutics and principle in strengthening public health services are being more recognized, and in order to incorporate these, 8 targeted public health program has been introduced under National Ayush Mission since 2 years. Now, I would like to invite Vaid C.N. Jani, Gujarat Director, to have a presentation on Arogya Samanvaya and COVID-19 activities conducted in the state of Gujarat. सबको मेरा स्नेह वंदन। और पहले मैं नेशनल आयुष मिशन को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमको यहाँ पे इतना अच्छा मौका दिया, और पूरे भारतवर्ष से नेशनल आयुष मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं और आयुर्वेद के आयुष के जो इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद प्रदान करती हूँ। गुजरात के अंदर जो आयुष की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, आयुष की जो सेटअप है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। नेक्स्ट, तो इसके अंदर हमारे यहाँ जो है आयुष एजुकेशन, इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी के हैं, आयुष हेल्थ सर्विसेज, और हमारे यहाँ एक यूनिक बात है कि आयुर्वेद फार्मेसियाँ भी है गवर्नमेंट की, जो राजपीपला और बड़ौदा में है। नेक्स्ट, ये जो कॉलेजेस हैं हमारी, इसके अंदर हमारे 5 गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेद के और एक होम्योपैथी का। हॉस्पिटल्स अगर देखें तो 38 हॉस्पिटल है, होम्योपैथी की जो है वो कॉलेज अटैच हॉस्पिटल है। डिस्पेंसरीज आयुर्वेद की जो है 583 है और होम्योपैथी की 272 है, और जैसे बताया मैंने कि 2 फार्मेसियाँ हमारी राजपीपला और बड़ौदा के हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर हमारा एक्सपेंशन है, इसमें हम एक नई कॉलेज सुरेंद्र नगर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, और हॉस्पिटल जो है हमारे आयुर्वेद की 3 नई शुरू होने वाली है। वो एक है सूरत है जो नेशनल आयुष मिशन से सपोर्टेड है, दूसरी अखंडानंद भद्र हॉस्पिटल जो हमारी बहुत पुरानी थी, वहाँ स्टैंड एलोन हॉस्पिटल भी होने वाली है, और एक विसनगर का एक हमारी नई हॉस्पिटल इस साल में हमने मंजूर करवाई है। ये हमारी जो कॉलेजेस है इनके अंदर जो हम स्नातक लेवल के जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, इसके अंदर पूरी 5 गवर्नमेंट कॉलेज को मिला के देखें तो 394 स्टूडेंट
इसके अंदर गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। हम अगर इसकी नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स जो चल रहा है हमारे 2 कॉलेज के अंदर अभी है। नेक्स्ट तो 35 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है वो वहाँ से लाभान्वित गवर्नमेंट सेक्टर से हो रहे हैं और हमारे 3 कॉलेज के अंदर हम आगे आने वाले साल में पोस्ट ग्रेजुएशन के नए डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं। होम्योपैथी कॉलेज का सेटअप देखें तो नेक्स्ट हाँ, एक गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज है और 3 जो है हमारे वो सेमी गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज है। इसके अंदर कुल मिला के 500 स्टूडेंट जो हमारे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आयुर्वेद हॉस्पिटल की जो देखें हम वहाँ की स्थिति जो गुजरात गवर्नमेंट की देखें तो 200 पथारी की हमारी सबसे पुरानी हॉस्पिटल मणिबेन आयुर्वेद हॉस्पिटल है जो कि सीधा आ जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट जाने दो। खास तो मुझे मतलब जो बताना है वो यहाँ है कि नेशनल आयुष मिशन का जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, इसके बाद जो हमारे आयुर्वेद को जो क्लिनिक चल रहे थे इसके अंदर एक हर्बल गार्डन का कंपोनेंट हमको मिला। तो इसके तहत हमने जो बातें आइडेंटिफाई की, जो हम ड्रग मतलब वहाँ पे लगाते हैं, इसमें से जैसे हमारे वात पित्त और कफ 3 दोष है तो इसके लिए वात के लिए निर्गुंडी है, पित्त के लिए गिलोय है और कफ के लिए हमने वासा अर्डूसी का मतलब ज़्यादातर इन लोगों को प्रस्तावित किया और सबको मतलब हमने मोटिवेट किया कि वो अपने किचन गार्डन और हर्बल गार्डन में लगाए। फिर हमने हमारी जो इससे मतलब हमारा ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट है वो हमको मिला नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। तो हम लोगों ने क्लास 1 से ट्रेनिंग वाली स्लाइड नेक्स्ट यस नेक्स्ट प्रीवियस यस। हम लोगों ने जो ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं था राज्य सरकार के बजट में, तो हम लोगों ने ये जो हमको नेशनल आयुष मिशन तहत हमको जो मिला पैसे, इससे हमने क्लास 3 से लेकर क्लास 2 और क्लास 1 की ट्रेनिंग करके हमने बहुत हमारी जो सर्विसेज है उनको हमने एनहेंस किया और कंटिन्यूएशन मेडिकल एजुकेशन के तहत सब लोगों को इससे बार बार हमने लाभान्वित करके दर्दियों तक वो लाभ हमने पहुँचाया। इस तरह से हमारे कोलावड़ा स्टेट मॉडल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे पूरा अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमारी कंटिन्यूस ट्रेनिंग इस तरह से चल रही है। यस, ये हमारे योगा सेंटर जो चल रहे हैं वहाँ पे। यस, वेलनेस सेंटर के अंदर आने के बाद हमको जो मतलब लाभ हुआ है वो है कि गांव-गांव तक योग इंस्ट्रक्टर, जो कि हम योग जो है वैश्विक लेवल पे प्रस्थापित कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो, क्योंकि योग जो है वो सबको मतलब अभी माइंड के प्रॉब्लम सबको है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है और जितने शारीरिक मतलब आपको प्रॉब्लम है इससे भी ज़्यादा मन के भी प्रॉब्लम इतने सारे हैं। तो वो एक गांव तक मतलब गया, एक अच्छी बात हमारे यहाँ हुई है। वहाँ पे आशा वर्कर और ANM जो है इनका हमने जो लाभ लेके हमारी आयुर्वेद सुविधाओं को हमने बहुत सुदृढ़ मतलब वहाँ पे किया है। इसके अलावा हमारा आयुष ग्राम जो है वो, तो हमारी जो टीचिंग जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनको हमने आयुष ग्राम का कॉन्सेप्ट देके हमारे स्टूडेंट्स और लोग पूरे एक गांव जो है उसको आइडियल गांव बना के वहाँ पे आयुष ग्राम का कॉन्सेप्ट देके हर घर के अंदर जाके उनके प्रकृति परीक्षण करना है, उनको पथ्य बताना है। इसी तरह से वो काम हमारा हो रहा है। हमारी जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद मणिबेन हॉस्पिटल, वो सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में भी प्रस्तावित की है। तो वहाँ पे भी जैसे हमारी हॉस्पिटल में वो पंचकर्म के साथ साथ फिजियोथेरापी और ये सब करके हम लोगों को वहाँ पे लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरी मतलब अब हमारे कोटेचा सर भी यहाँ उपस्थित है और मेरा एक अभी जो हम 21 जून को विश्व योग दिन मनाने जा रहे हैं, तो इसमें मेरा एक हम लोगों ने सोच के रखा है
कि योग फॉर मानवता, ह्यूमैनिटी। तो मानवता अगर हमारे अंदर लानी है तो जो योग के 8 अंग हैं हम सबको पता है। अभी हम जो कर रहे हैं वो आसन और प्राणायाम पे ज़्यादा मतलब जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके जो 2 पहले जो अंग है वो यम है और नियम है। तो यम के अंदर भी हम सबको पता है वो कि 5 बातें हैं, नियम के अंदर भी 5 बातें हैं। तो मानवता अगर लानी है, और हमारे ऋषियों ने जो शास्त्र के अंदर स्वस्थ की जो चिकित्सा स्वस्थ की जो व्याख्या बताई है, इसके अंदर जो बोला है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अगर आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता हमको लानी है तो फिर यम और नियम हमारे जीवन के अगर अभिन्न अंग होंगे तब जाके हो सकती है। मानवता को अगर हमको देखना है तो पशुता देखेंगे तो मानवता का पता चल जाएगा कि पशुता क्या है। तो किसी का मतलब ले लेना, किसी से खींच लेना, वो करना, वो अच्छी बात नहीं है, वो पशुता है। हम खुद हमारे लिए ही सोचे तो वो तो प्रकृति है, किसी का ले ले तो वो तो इस तरह से हम यम और नियम की बात मतलब सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में आए। और इस साल जो हम योग का मतलब करेंगे तो इसके लिए ये बातों को एलोबरेट करने का सोचा है। दूसरा, हमारे नेशनल आयुष मिशन अंतर्गत हमको जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और ये सुप्रजा और वयोमित्र, अच्छा ओके, तो हम इसके लिए हमारी कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट, उनको एक सब्जेक्ट हमने दे दिया है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, उनको अगर आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास गवर्नमेंट फार्मेसियाँ भी है, हमारी खुद की है। तो हम दवाइयाँ सिलेक्ट करके जो दवाइयाँ इनको ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब देना है, जैसे विषगर्भ तेल है, महामास तेल है, बलाश्वगंधा आदि, तो वो हम वहाँ पे बनाएंगे और ये पेशेंट को लाभान्वित करेंगे। और सुप्रजा वाला जो है तो हमने गर्भ संस्कार मतलब विवाह के बाद तुरंत जब बच्चा आना है तो उसके 6 महीने पहले से कैसे पथ्य wellness, yoga, geriatric treatment as well. Ayurveda has walked hand in hand with the mainstream medicine and established its role during the COVID pandemic, benefiting thousands of people. While Gujarat was still emerging from COVID, it got another blow from yet another epidemic, mucormycosis, also known as black fungus. Many patients suffered from mucormycosis, which is a deadly fungus and was proving to be very challenging as well to treat. More than 100 patients of mucormycosis were treated with Ayurveda intervention at Government Akhandanand Ayurveda Hospital, Ahmedabad, and almost all the patients were saved from surgical excision of their vital body parts and got relief from this deadly fungus. Patients were benefited through Panchkarma treatment with Nasya Karma nasal administration of Ayurveda medicine Jalakavachran, that is leech therapy, which helps in the removal of Dushitra, Lepa Chikitsa, Dhumrapana, that is administration of medicated smoke, etc. For the first time, Rakt Nasya, that is administration of blood in the nostrils of the patient, was done as directed by Acharya Sushil. The successful treatment of mucormycosis with Ayurveda was very well covered by different print and electronic media. Ayush thus played a vital role in the treatment of mucormycosis, saving the lives of many patients. Over 1 lakh thalassemia major children are born every year, posing not only a health threat but also a huge economic burden. An estimated 40% of the cost of treatment of patients with thalassemia is attributed to blood transfusion. India is already facing a blood shortage of about 3 million units every year. To overcome such challenge, Thalassemia Specialty Clinic is started in Gujarat. The treatment includes the unique and classical concept of Aja Rakt Basti, that is goat's blood enema, along with Punarnavadi tablet and Majja Grit. More than 400 patients suffering from thalassemia major are being treated at Thalassemia Specialty Clinic, and the duration between two blood transfusion has been considerably increased. Serum ferritin, which is a complication of thalassemia, was also decreased. Improvement in the morphology in red blood cell was also observed. About 900,000 patients of sickle cell trait and 70,000 sickle cell disease are found in tribal population of Gujarat.
A research study was carried out at the Indian Institute of Public Health with the coordination of Department of Ayush on the role of Ayush in reducing sickle cell crisis and impact of Ayurvedic intervention in improving the nutritional states of children and adolescents girls where the level of hemoglobin was increased in sickle cell patients and body weight was improved in more nourished children and hemoglobin ones also increased noticeably. To benefit the end person, Ayush Mela were organized in each district of the state and Ayush was promoted across the state. Mobile dispensary service is provided with to the people of the state and 7 such mobile dispensaries are running apart from about 900 Ayurveda and homeopathy dispensaries and 38 Ayurveda hospitals. Incidence of a vascular necrosis, that is death of bone tissue due to a lack of blood supply, has notably risen among the patients recovered from COVID. A number of patients suffering from a vascular necrosis are being treated at Ayush hospitals and with the help of Panchkarma treatment the patients are recovering very well and safe from surgery. Manipal Government Ayurveda Hospital was declared as Center of Excellence in Neurological Diseases and a number of patients suffering from hemiplegia are taking treatment at this hospital and other hospitals as well. According to a study, India has about 7 million elders afflicted free with Parkinson's disease. Ayurveda is proving to be a boon to such patients. Significant improvement is observed in such patients with Panchkarma treatment. Cases of cirrhosis of liver are also being treated successfully through Ayurveda. We aim to develop Ayush specialty clinic in hematological disorders, liver diseases, musculoskeletal disorders, cardiac disorders, and much more. Let's all come together to fulfill the dream of Har Din Har Ghar Ayurveda. Thank you, Honorable. Thank you, ma'am, for your presentation. Now I would invite Dr. Padmanandan from Tamil Nadu, Senior Consultant, for his presentation on Amma Magaperu. 5 minutes, sure. Yes, I got video. Respected Secretary Sir, respected dignitaries on the dais and off the dais, respected Joint Secretary, directors of all states, all senior officials of Ministry of Ayush, and all state officials and invitees. Good morning to each and every one of you. Siddha is a Tamil word derived from Siddhi. That means attaining perfection in life or heavenly bliss. That is the main meaning of the word Siddha. It is the foremost of all other medical systems in the world. Chief Minister of Tamil Nadu announced Magaperu Sanjeevi kit to pregnant women. BC 10,000 to BC 4,000. Siddha medicine is a form of traditional medicine originating in southern India. It is one of the oldest medicine in India. It is exclusively linked with Tamil art and culture and civilization. The best practice we conduct in Tamil Nadu at the community level regarding the health of pregnant mother to take care in antenatal and postnatal care is the best practice we are conducting in Tamil Nadu. Please. Slide, please. This is reproductive and child health. The maternal mortality rate, MMR, in India is 97 per 1 lakh live births. In Tamil Nadu state, it is 54 per
1 lakh live births. That is the latest reports of SRS. Next. Next slide. Our challenge is normal delivery versus cesarean delivery. This statistic shows that how many states are adopting cesarean section very clearly. According to a research published in medical journal NAMA Network Open in March, the cesarean birth rate in India is above the benchmark set by the WHO. India suffers a twin problem where it faces deficit of access to cesarean deliveries in poorer communities and the emerging overuse of cesarean delivery in more affluent regions and social groups. Next, please. Next slide. No. Now we focus on normal vaginal delivery, for which we designed a kit which takes care of both antenatal and postnatal care. This is very unique in nature. Just like the timeline, how it started. In the year 2009, a clinical study was conducted at Punamalli in Chennai with antenatal mothers. In 2015, they come out with a plan that we can try to go for a normal vaginal delivery. So we designed a kit that is called as Mahaperu Sanjeevi kit. So that kit was distributed throughout 1,022 Siddha wings at a cost of 850 rupees per kit. Next, please. Next. What is Mahaperu Sanjeevi kit? And what are all the medicines inside the kit? And what is the purpose of asking the antenatal mother to take these medicines? There are 5 issues that has to be tackled during the time of pregnancy and after delivery. So we concentrated on that line. The first one is Ayush should, that is especially Siddha or any branch of our Ayush, should concentrate on the anemia, targeted anemia. So to prevent anemia during the time of pregnancy, we have to prepare kit. And to focus on normal delivery, we have to give some medicines. To prevent the delivery of immature babies, we should give some medicines. To increase the milk secretion of the mother after delivery, we have to give some medicines. And to finally, to boost the immunity of the infant, we have to take care of it. So this was the concept of our think tank of our state people, that we have to make a pure medicine, exclusively a herbal medicine, that is used regularly in their kitchen also, without adding any chemicals. We have to come out and serve the society, and we should give normal delivery. That was our aim at that time. So next. Next, please. Intervention. As we all know, there are 3 trimesters in pregnancy period. So first trimester, we designed the medicine. Second trimester, we designed medicine. And third trimester, we designed medicine. And after delivery, we designed on medicine. So please, next. In the first trimester, we give only 2 medicines. That is called as Madulai Manapagu and Karivel Pudi. It contains nothing but the juice of pomegranate and honey. And the second one is, that is curry leaf powder. So why we give this is, during the first trimester of pregnancy, we all know there will be a morning sickness. Vomiting will be there, nausea will be there, anorexia will be there. To correct all these things without using any allopathic medicine. Our great-grandmothers used many things. So we thought of in that plan, and we prepared a medicine called Madulai Manapagu, that is nothing but the extract of pomegranate and adding honey.
So what will happen after taking this medicine mean that nausea and vomiting will be arrested. So every day 5 ml in the morning and 5 ml in the night it has to be taken. And what is the use of giving this curry leaf powder? This curry leaf powder is very good for anorexia. There will be a loss of appetite will be there. And if that pregnant mother takes anything in the early trimester of pregnancy, there will be vomiting sensation will be there. To arrest that, we have advised and we have included that curry leaf powder in the first trimester of pregnancy. And we advise all our antenatal mothers to take this compulsorily for first trimester only. Second, next slide. Next slide, please. In the second trimester, please, second trimester, previous one. In the second trimester, we have designed only 4 medicines. That is tablet Anabedium, Nellika Ilegium, and Yeladi Choram tablet, and Bhavana Panjangula Thailam. Why we have to give these 4 medicines? The first one is tablet Anabedic. As we all know, that in the second trimester, it's a prime period, as a prime period to correct anemia. So, in order to correct anemia, we give this. Okay. 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 And it contains ferrous sulfate only. And Nellika Ilegium is nothing but chontrash. And the third one is Yeladi tablet, that is nothing but the tablet of cardamom. And the fourth one is Bhavana Panjangula Thailam, that is that the oil of castor oil and tender coconut. So this prevent, what's the purpose of giving this is, this prevent urinary tract infection as well as constipation also. And then, yes, madam. Actually, these details are not required. Okay, madam. Okay, okay. Just go to the movie is good. Okay, madam. Okay. And the third trimester also, we give 3 oils for external applications and for easy delivery. And in the postpartum case, after delivery, we give only 3 tablets. There is one is Sadavari Lechium, and the another one is Pindazelum for external application, and Uraimothri for the baby. So these are the 3 things we give, and in this way, we take care of our antenatal and postnatal care. So our aim and objective of this is to improve the health of pregnant women, lactating mothers and infants, to increase the number of normal vaginal deliveries, to increase the number of normal birth weight babies. So, next please, next. The funds received under NAM is, in 2017-18, we received 4 crores rupees for this project, and in 18-19, 2 crores project, 2 crores, and 19-20, 192 lakhs and 50,000 rupees, and 21-21, 4 crores we received as a grant from the NAM. So, what is the outcome out of this? A lot of normal deliveries has happened, and also the baby's birth weight has also improved a lot, and hemoglobin level and everything is maintained even during antenatal and postnatal care. And before I conclude, I wish to say one thing, that our concern about the health of all human beings is absolute, because its approach is holistic. Thank you. Thank you, sir. As we have short of time, I would like to extend my heartfelt thanks to all our distinguished speakers who are on the dais, and all our respected dignitaries, delegates, and officials present here for this session. And now we are confident that all states have got a good takeaway from this session and will expect a better outcome and a sustainable practices in your state for a par excellence. Thank you. Now I would like to give a token of appreciation to all our respectable speakers
I would like to invite Dr. Suresh Kumar, Deputy Advisor Ayurveda, Minister of Ayush, to give over the mementos. Srimati Leena Jori, IAS, Principal Secretary Health, Government of Uttar Pradesh. I would now like to invite Sri Dayanand P, Secretary, Chhattisgarh. I would like invite Sri Keshwendra Kumar, IAS, Special Secretary, Kerala. Now, Dr. Pankaj Pandey, Secretary, Uttarakhand. Sri Bhagwat Singh, Mission Director, Rajasthan. Vaid C.N. Jani, Director, Gujarat. Dr. Patmanan, Consultant, Tamil Nadu. Thank you all. Now we have a tea break at the atrium, ground floor, and after that we will have a session on procurement.